आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून समझना नहीं चाहते हैं। आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज एंटी एम्प्लॉय। अब आप बताइए कितनी कॉस्ट लगाएं, 25,000, 50,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ्टर नोटिंग दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज गिवन अ colored interpretation to the circular of finance department. Compliance करनी थी। Entry is the minor. But it is the leave encashment वाला नहीं, circular of finance department clarified by the state election. लीव एनकैशमेंट 240 दिन का चाहिए था, पर 300 दिन का वो लिख दिया था डीओ ने। ऑन माय लॉर्ड हैज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन बाय द पीएस रिप्लाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैड फाइल्ड द एफिडेविट ऑन। कब फाइल किया है? 27 को साहब फाइल किया। 27th of जनवरी मंथ, डे बिफोर स्टोरी। कहाँ है भाई वो रिकॉर्ड पर? दीजिएगा। क्या कहा पीएस ने आपके? कंसर्न डीओ एंड माय लॉर्ड प्रिंसिपल एंड डीलिंग क्लर्क हैज गिवन सो कॉल्ड नोटिस एंड। ठीक है कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी समझना नहीं चाह रहे हैं साहब। इसमें मेरी 240 दिन अगर उसके बाद नहीं बुलाया नहीं होगा, अगर 373 दिन था तो द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनकैशमेंट अप टू 300 डेज। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी समझ में नहीं आता है साहब, एक मैं निवेदन कर लूं सर। 1/7/2018 के बाद 1/7/18 के बाद ऐसा नहीं कहा है कि आपको लीव पे बुलाया जाएगा। अगर बुलाया जाएगा तो जो लीव वो होगी। 19 में ये सर्कुलर आ गया कि जो सीमा है 240 दिन की, उसको बढ़ाकर 300 दिन किया जाता है। और यह व्यक्ति रिटायर हुआ 2020 में 22 में 2022 को जब ये रिटायर हुआ, अगर इसके खाते में 300 दिन की लीव एनकैशमेंट लीव उपलब्ध थी, भले ही वो पुरानी थी, then he is entitled to leave encashment of 300 days. पर मेरी प्रार्थना थी साहब, 1/7/18 के पहले अगर वो काउंट हुआ है। 1/7/18 के पहले काउंट कैसे कर लेंगे? आप जो 22 में रिटायर हो रहा है तो आप 22 में काउंट करेंगे ना। नहीं, सर्कुलर कहता है साहब। ये कहाँ कहता है सर्कुलर? पढ़िएगा क्या कहता है। चलिए सर्कुलर पढ़ाइएगा। एनेक्शर 1/7/18 के पहले भी लॉर्डशिप इन्होंने 373 रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ चतुर्वेदी जी, 2 मिनट रुक जाओ। यही प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर लागू कर देंगे। पूछिएगा कब रिटायर होने वाली हैं वो। ये एनेक्चर P2 है। एनेक्चर P2 पढ़िएगा। वित्त विभाग की संदर्भित ज्ञापन दिनांक 8/1/91 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश के में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की पात्रता संबंधी गणना की विधि निर्धारित की गई है। हाँ, इस गणना को क्रमशः परिपत्र क्रमांक 29 फरवरी 96 एवं 25/9/12 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन वर्णित परिपत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्त दिनांक से दिनांक 9/3/87 तक की अवधि के लिए 1 वर्ष में 15 दिन तथा 9/3/87 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए 1 वर्ष में 7 दिन के लिए आधार पर कुल पात्रता ज्ञात की जानी है। दिनांक 9/3/87 के पश्चात की संपूर्ण सेवा अवधि के लिए प्रथमतः 2 वर्ष के कालखंड पर 15 दिन की दर एवं शेष अवधि के लिए 7 दिन प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की जानी है। वित्त विभाग की सूचना दिनांक 28 जुलाई 18 से मध्य प्रदेश सिविल सर्विस के नियम 25 को संशोधित करते हुए शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है। उपयुक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा 1 जुलाई 18 के पश्चात सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नवीनीकरण की करता है। यह आदेश दिनांक 1/7/18 से प्रभावशील माना जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रभावशील माना जाएगा मतलब जो 1/7/18 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनको 300 दिन का लीव एनकैशमेंट मिलना है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लीव इन देयर लीव अकाउंट। आप बोले तो हम गिल्डियाल साहब को रिक्वेस्ट करके एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देते हैं। मेरी प्रार्थना साहब ये थी। प्रार्थना नहीं है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून समझना नहीं चाहते हैं। जो एंटर हुआ साहब, जो सर्विस बुक में जो एंट्री हुई है ना, इनकी 1/7/18 की है, तो एट द टाइम ऑफ माय ऐसा नहीं होता। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज एंटी एम्प्लॉय। सर मैं आपसे 2 मिनट रिक्वेस्ट करूं, गिल्डियाल साहब पढ़िएगा, P2 दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो उसमें लिखा है कि 240 के बजाय 300 दिन होगा। आप उसको कट कैसे कर देंगे? साहब ये अगर आप नहीं, मैं आई हैव टू राइट हियर विश्राम का। मेरी सिर्फ प्रार्थना साहब ये है कि ये विश्रामावकाश जो प्राप्त करते हैं साहब, उनके ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ये था। आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रही है? साहब को ये एफिडेविट दे दो 2 मिनट प्लीज, जिससे कहीं कोई साहब 2 मिनट देख लीजिएगा गिल्डियाल साहब कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे भी। इनका एफिडेविट ये कह रहा है आपके पास में कॉपी चतुर्वेदी? अच्छा ठीक है, फिर मेरे को दे दीजिए।
मैं आपको सब फैक्ट्स बताता हूँ। ये आदमी 2022 में रिटायर हुआ। अब इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रही है कि क्योंकि 2018 तक इनके खाते में 240 दिन का था और उसके बाद इनको कभी भी समर वेकेशन में बुलाया नहीं गया, इसके कारण जो है his leave is to be restricted to 240. Now that is an erroneous interpretation, because if the leave in his leave account was to the tune of 373 days as on 2018, then that leave for 73 days will lapse on the day on the eve of his retirement, and he could have availed that leave. Yes. And he will be entitled to maximum encashment of 300 days. So on that date, if the leave accumulated in his leave account was more than 300 days or 300 days, then he will be entitled to encashment of 300 days leave. बाद में क्या हुआ, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। उससे आप उसकी पुरानी लीव थोड़ी कम कर देंगे। हाँ, पुरानी लीव थोड़ा ना कम कर देंगे। वो जो 373 गलत क्या है- उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खाते में डलवा दें? नहीं, इस बार मेरी प्रार्थना सबसे जो कॉस्ट भी बताइएगा कितनी जो लगेगी, प्रार्थना सर्विस- करने के बाद में कॉस्ट जो बताइएगा। सर्विस बुक में साहब जो एंट्री है ना 373 दिन की, हाँ, दैट इज रॉन्ग एंट्री कितनी मानो। सही एंट्री क्या है बताइएगा उसके ना। खिलाफ हम नहीं, उसके खिलाफ नहीं, सही एंट्री का गणना कहाँ है बताइएगा इस एफिडेविट के साथ में कि सही एंट्री कितनी है। आप रिटायर्ड आदमी के खिलाफ पहले तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ साहब वो नहीं, सिर्फ नहीं, आपको एक साथ 18 की स्थिति में इनका 240 दिन का नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही आपको समझा रहे हैं। अब आप बताइए कितनी कॉस्ट लगाएं, 25,000, 50,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ्टर नोटिंग दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज गिवन अ colored interpretation to the circular of finance department. मतलब एंट्री इज द माय बिफोर द कॉस्ट कितनी, 25,000 देंगे कि 50,000? मेरी सिर्फ प्रार्थना ये थी कि एंट्री ऑफ द सर्विस बुक इन बिफोर द माय लॉर्ड आफ्टर दिस सर्कुलर माय लॉर्ड। क्या मतलब? 2019 का जो सर्कुलर आया उसके पहले की सर्विस बुक में जो एंट्री थी साहब, एट दैट टाइम दे आर एंटाइटल्ड फॉर 240 डेज ओनली। ये नहीं होता वकील साहब, बस वही मेरी प्रार्थना। जाइएगा इसको सर्कुलर हाँ, रिट अपील में जाएंगे, चैलेंज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट? मतलब एनेक्चर P5 में ये 15/2/21 की एंट्री है। P5 कब लगाया आपने? ये इन्हें पिटीशन के साथ ही P4 तक लगाया भैया, P5 है। P5 हमारे पास लगा ही नहीं है। ललिता प्रसाद है ना ये, ललिता प्रसाद द्विवेदी, कहाँ लगा है P5? देखो भाई आपके उसमें लगा है क्या P5? तो P4 तक लगा है। P5 और तो यहाँ क्यों नहीं लगा है P5? आपने इंडेक्स में एंट्री की है P4 तक। देखते हैं भाई, 21 नंबर पेज भी देखते हैं। हाँ, 21 नंबर पेज, यस P5। लास्ट में ये स्टीप में लिखा इंडेक्स में है, क्यों नहीं लिखा इन्होंने? लिखा है क्या इसके इंडेक्स? क्योंकि शासन द्वारा एक मिनट रुक जाइए, लिखा है। हमारे पास जो कॉपी स्कैन होके आई है उसके इंडेक्स में नहीं लिखा है P5, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर यहाँ कैसे हुआ? देखिएगा, आप देखिएगा इनके इंडेक्स में P4 कैसे स्कैन हुआ है। इसमें देखिए, इसी में आई है 7th, ये है क्या? देखिएगा, देयर इज अ मिसमैच इन द स्कैन्ड कॉपी एंड द फिजिकल कॉपी इन नेक्स्ट पैरा, इन WP 25254/23 in the physical copy petitioner has shown annexure P5 in the index as copy of relevant page of service book, full stop. In the scanned copy, annexures only up to P4 have been shown, though P5 is available on page 21, but it has not been shown in the scanned index. There is an ambiguity in the scanned copy and the physical copy. Full stop. It is a serious matter. Such ambiguities can result in miscarriage of justice. Full stop. है आपके कंप्यूटर पे P5 है क्या? देखिएगा ना। P4 के साथ ही जुड़ा है। अरे जुड़ा है यहाँ पर तो इंडेक्स में। हाँ, अलग से नहीं है साहब। Let action be taken against the delinquent under intimation to the court within 7 days that how a scanned copy is different from the physical copy available on record. Next para. Petitioner's case in short is that petitioner attained age of superannuation on 30/4/2022. Full stop. In his leave account, there were 358 days of leave available. Full stop. In terms of Finance Department Circular
He was dated 8 मार्च 13। 8 मार्च 19। नहीं सॉरी, 28 जुलाई 2008। फाइनेंस डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर F-6-1/2018 नियम/4 हिंदी में 4 कॉमा डेटेड 28 जुलाई 2018 रूल 25 ऑफ मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज within bracket leave bracket close rules comma 1977 have been amended and the ceiling of leave encashment was enhanced from 240 days to 300 days. Full stop. Next para. Circular dated office memorandum dated 8 March 2019 annexure P2 provides that persons retiring after 1st July 2018 shall be, or in case of their death, shall be entitled to leave encashment to the extent of 300 days. Full stop. In the present case, next para, in the present case, reply was filed by the government advocate. क्या गवर्नमेंट एडवोकेट पढ़ते लिखते नहीं है आपके यहाँ? क्या उनको पढ़ने से मनाही है? Duly supported with an affidavit of one Shri G.P. Upadhyay, District Education Officer, Rewa. Full stop. Next paragraph. In the reply so filed by the state, a prayer is made for dismissal of the writ petition on the ground that since no fresh leave was credited to the leave account of the petitioner after 1/7/2018, therefore he will be entitled to leave encashment to the extent of 240 days only. Full stop. Next paragraph. Finding the reply to be absurd inasmuch as it was admitted by the answering respondents in para 6 of their reply that till 15/5/2017 there were as many as 373 days earned leave outstanding in the leave account of the petitioner, comma, this court had requested the Principal Secretary, School Education Department to file his/her affidavit. Next paragraph. In compliance of the orders of this court dated 12/1/24, Srimati Rashmi Arun Shami, wife of Shri Sanjeev Shami, presently working as Principal Secretary, School Education Department, has filed her personal affidavit. Full stop. After mentioning about after admitting in para 2 of the said affidavit filed wide IA number 1348/2024, comma, that petitioner attained age of superannuation from the post of higher division teacher on 30/4/2022. It is mentioned that as per Finance Department circular dated 8/3/2019, the limit for accumulation of earned leave has been increased to 300 days instead of 240 days after 1/7/2018. Full stop. Thereafter, it is mentioned that the limit for accumulation of earned leave before 1/7/2018 was limited to 240 days. And thereafter, it is committed that since no fresh earned leave was credited to the account of the petitioner after 1/7/2018, he will be entitled to leave encashment to the extent of 240 days, which is factually incorrect and reflects
poor understanding of legal provisions by even the principal secretary of the school education department. Next paragraph. At this stage, this court requested Shri K.C. Gildial, learned senior advocate, assisted by Shri Aditya Veer Singh, to assist this court as an amicus. Next paragraph. Shri K.C. Gildial is of the opinion that on account of existence of 373 days of earned leave available in the leave account of the petitioner, comma, he will be entitled to leave encashment of 300 days of leave, which is the higher ceiling for leave encashment, and accumulation could not have been pegged at 240 days, and the interpretation given by the principal secretary is erroneous. Full stop. Next paragraph. Therefore, at this stage, Shri Manas Mani Verma submits that interpretation given by the principal secretary is correct, and since no new earned leave was credited to the account of the petitioner after 1/7/2018, 2003. his maximum limit for leave encashment will be 240 days only. Next para. Once a provision has been made applicable and Rule 25 of the leave rules has been amended, then benefit of that amendment cannot be taken away by the respondents by giving erroneous interpretation to the leave rules or the finance department circular. Full stop. It is true that any leave on the eve of retirement above the ceiling of 300 days would stand lapsed. Full stop. Similarly, if the leave accumulated would have been less than 300 days on the eve of retirement, then petitioner would have been entitled to leave encashment to that extent of accumulated leave, notwithstanding the higher ceiling of 300 days. Full stop. Next paragraph. Thus, when examined from this perspective, and also the provisions of amended Rule 25 are taken into consideration, then it is evident that the principal secretary has failed to take a judicious view of the matter and has tried to mislead the court by giving her own interpretation, not supported with any documentary or other evidence. Thus, petition deserves to be allowed and is hereby allowed. Respondents are directed to pay leave encashment of 300 days in favor of the petitioner within 30 days, along with 9% interest from the date of his superannuation, that is 1 May 2022 till the date of actual payment. रिमेनिंग 60 डेज बचा है सर 240 का हाँ तो उसी जितने भी है, ठीक है ना, this difference of 9% on the difference of leave encashment, that is 60 days. Respondents will also bear cost of this litigation, which is quantified at rupees 10,000.